I hope it's clear. So holding period, Sikandar, holding period is basically आप कितना hold कर सकते हो shares. ओके जब भी आप कोई भी चीज जब भी अपनी है आपकी है what you can do, you can sell it whenever you want. You can buy and you can sell it whenever you want. आपको आपके बच्चों को देना है तो आप वो भी कर सकते हो because it is yours. You are the owner of those number of shares. लेकिन in the derivatives market a contract has an expiry period. कोई भी contract open ended नहीं रहता है, right? It has an expiry period. We will learn more about it. Okay, this is just to list down the difference between the cash and the derivative segment. So this has an expiry period कि भाई ये contract आपका 1 महीने में खत्म होएगा, ये 2 महीने में खत्म होएगा, maximum 3 महीने में खत्म होगा. ओके सो ये एक्सपायरी डेट रहती है कॉन्ट्रैक्ट की एंड जब भी जो भी एक्सपायरी डेट है वो डेट पे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है और उसमें से आपको स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकलना है. ओके आप नहीं करोगे तो एक्सचेंज कर देगा बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नल एंड वॉइड आफ्टर द एक्सपिरेशन डेट. We will learn more about this when we do jargons. I'll explain this to you in details. This is just to list down the difference between the cash and the derivatives market. Now, moving ahead. So I'm getting a message कि no voice नहीं आ रही है. So is everybody getting the voice? Is my voice clear? Voice is clear, right? Okay, great. Because so yes. So now guys, whoever is जिसके भी voice नहीं आ रही है, so I request कि please log in and log out. I mean log out करके वापस log in करिए. कभी simple things like this help, and most of the time simple things help in life. Okay, so derivatives. So okay, great. Now, types of derivatives. There is futures. So there are two types of derivatives we know, futures and options. Okay, there are two types of derivatives, futures and options. So let's learn more about them. Abhi now what are jargons? Jargons, matlab there is a so I don't think so. Gaurav, and there is one speaker icon on top left too. Maybe that person has muted it. Yeah, I guess so. Please, Gaurav is right. शायद आपने mute कर रखा है उसको. I don't know. Yeah. Okay. So what are jargons? So jargons are terminologies और basically जो market lingo जो रहती है, you know, तो that would समझना जरूरी है because कोई बोलेगा अरे ये spot price क्या है, तो आप बोलोगे अरे spot price, what is spot price? Underlying price, you say what is underlying price. So you know you need to understand that what exactly are the market lingos. Okay, when you talk about these lingos you need to understand them. So let's go through it quickly. Spot price or the underlying price. So what is that? That price refers to the price of the cash market. That refers to the price of the cash market. Everybody understood? जो cash market में जो price चल रही है, जो underlying रहता है, that is the this thing. All right, that is called the spot price or the underlying price. Futures. So the price at which the participant enters into a contract, into a futures contract, agrees. Okay, I'm sorry. The price at which two participants in a futures contract agree to transact at on the settlement date. So what exactly does this mean? Does everybody know futures? So should I need to explain, or everybody knows what futures are? Should I need to explain? If I need to, then I'll quickly explain. Okay. Okay. Okay, so it's a mix. People, some are saying, please explain. Some are saying, no. Okay, fine. Okay, so I'll just quickly give you a little explanation on what exactly futures are. So, आप अगर now, okay, Tanmay,
Okay, Tanmay and Sandeep. They are the two traders. Okay, the Tanmay and Sandeep are two traders. So Tanmay thinks. Now tell me very quickly, what is the closing price of Reliance? Closing price of Reliance on Friday? Quickly. Let's take the closing price. Okay, so let's take the closing price at say 2600. 2600 is the closing price. Okay, what is the closing price? 2600. Now 2600 Reliance has closed. Example doesn't matter here or there. I'm just giving you an example. 2600 पे Reliance has closed on Friday. Tanmay and Sandeep दो traders हैं. ओके, तन्मय एंड संदीप दो ट्रेडर्स हैं. तन्मय का ये व्यू है कि 2600 से रिलायंस जाने वाला है वेयर 2700. तन्मय क्या क्या व्यू है? 2600 से 2700 रिलायंस जाने वाला है. अभी तन्मय को रियल शेयर्स तो बाय करने नहीं है. उसको ही इज नॉट इंटरेस्टेड. उनको तो बस 2600 में लेके 2700 में बेचना है या से 2650 में बेचना है, 50 रुपीज. ओके, his view is what, that I want to earn 50 rupees out of this market volatility. मुझे कोई रिलायंस लॉन्ग टर्म होल्ड करने में इंटरेस्ट है नहीं. ओके, तन्मय को कोई लॉन्ग टर्म होल्ड करने में रिलायंस इंटरेस्ट ही नहीं है. उसको 50 रुपीज कमाना है और वो शेयर्स में से बाहर निकलना है. तो एंड उसके पास कितना है? ही हैज प्रोबेबली 1 लाख रुपीज इन हिज अकाउंट. ओके, ही हैज 1 लाख रुपीज इन हिज अकाउंट. So what he will do is that he will buy. Okay, so that was Tanmay's view, that usko he is bullish on Reliance. What is his view? He is bullish on Reliance. उसको लगता है कि Reliance का 50 रुपए का मेरे को मूव मिलेगा अपसाइड. संदीप इज बेरिश ऑन Reliance. उसको लगता है यार ये खत्म है, अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इतना एट हाइज. न्यूज इज बैड, वॉर हो रहा है. आई थिंक ये Reliance 2550 होने वाला है 100%. मिनिमम 2550 तो होएगा ही इन द कमिंग डेज. I am not bullish at all on Reliance. Okay, अभी उनके पास शायद शेयर्स हैं रिलायंस के, जो उनको लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म तो शेयर्स अच्छे ही है, लेकिन मुझे अभी नहीं बेचने हैं उनको. लेट मी जस्ट, बट आई वांट टू आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द मार्केट गोइंग डाउन बाय 50 rupees. Okay, so it's not necessary that you need to own shares. I'll just put a disclaimer here. I'm just this thing, so what happens is that I'm not giving you like a real this thing. Okay, so he thinks that so it's not necessary that you need to hold shares in the futures market. You can even buy or sell futures का कोई भी. So संदीप ने बोला that okay, I think मुझे एडवांटेज लेना है 50 रुपए नीचे आने का. Okay, so what Sandeep does, he sells one contract of Reliance. What does he do? संदीप ने एक कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस का बेचा. एट व्हाट प्राइस? एट द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्या है? 2600. ओके, 2600 मार्केट प्राइस है. तो संदीप ने एक कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस का बेचा. एंड किसने खरीदा? तन्मय ने खरीदा. क्यों तन्मय ने खरीदा? बिकॉज उसका व्यू बुलिश है, संदीप का व्यू बेरिश है. ओके, सो एक ने बेचा, एक ने खरीदा. Did you understand? So क्या बेचा और क्या खरीदा? Tanmay has said that I will sell you. क्या क्या है लिखा कॉन्ट्रैक्ट में? किसने बेचा? संदीप ने बेचा. किसने खरीदा? तन्मय ने खरीदा. तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा है that by at the expiration date मैं आपको रिलायंस 2600 में बेचूंगा. क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में? आई विल सेल शेयर्स ऑफ रिलायंस. क्या है? लॉट साइज. लॉट साइज इज व्हाट? द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज रिटन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. लॉट साइज इज फिक्स्ड. आप और मैं नहीं तय करते हैं क्या लॉट साइज है, एक्सचेंज तय करती है, और वो उसने सबके शेयर्स के लॉट साइजेस रखे हुए हैं. ओके, लॉट साइजेस change per shares. Every share has a different lot size. Now,
सो ये जो जो लॉट साइज, सपोजिंग 250 शेयर्स इज द लॉट साइज, ओके, सो 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस मैं आपको बेचूंगा एट द एक्सपिरेशन डेट एट 2600। ये संदीप ने लिखा है। नाउ तन्मय ने वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, सो व्हाट डज दैट मीन? What does that mean? It means that he is going to buy Reliance at 2600 from Sandeep. Did you understand? एक ने बेचा, एक ने खरीदा, एंड ऑफ द मंथ दे आर गोइंग टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। एक खरीदेगा और एक बेचेगा। क्या प्राइस पे? 2600 पे। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो ये कॉन्ट्रैक्ट उनका हो गया। तो जब ये जो बेरिश है वो क्या बोलेगा है, भाई मुझे तो आपको बेचना है ना 2600 में, मैं एंड ऑफ द मार्केट में खरीदूंगा 2550 में और आपको बेचूंगा 2600 में। दैट इज संदीप्स व्यू। तन्मय का क्या व्यू है, ठीक है ना, मैंने खरीदा है ना आपसे 2600 में खरीदूंगा ना, लेकिन मैं मार्केट में बेचूंगा 2650 में। ओके, सो दैट इज हिज व्यू, राइट? सो द पॉइंट इज दिस इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। रियल शेयर्स ना किसी ने बाई किए ना किसी ने सेल किए, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। एक ने कॉन्ट्रैक्ट बेचा, एक ने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द बेसिक ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली करंट मार्केट प्राइस जो होती है, कैश मार्केट होती है, ओके, कैश मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस एग्जैक्टली नहीं होते हैं। कभी देयर इज अ प्रीमियम और कभी देयर इज अ डिस्काउंट। अगर 2600 का कैश मार्केट में रिलायंस का प्राइस चल रहा है, सो इट इज पॉसिबल दैट फ्यूचर्स इज ट्रेडिंग एट से 2605 रुपीज या 2610 रुपीज। दैट इज अ प्रीमियम, कि भाई 10 रुपए का प्रीमियम है फ्यूचर्स के ऊपर। ओके, और 2600 अगर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, सो इट इज पॉसिबल दैट रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 2590, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट है फ्यूचर्स के ऊपर। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सेंटिमेंट्स, कि क्या सेंटिमेंट है, बुलिश है या बेरिश है या क्या है। सो कभी कभी प्रीमियम और डिस्काउंट हो जाता है, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम। ओके, हाउ व्हाट देयर रिव्यू इज। सो दिस हैपेंस समटाइम्स, सो इट चेंजेस। ऐसा नहीं है कभी बहुत मतलब एकदम नॉमिनल प्रीमियम या डिस्काउंट रहता है, कभी ज्यादा रहता है, कम रहता है, इट हैपेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट jargon, contract cycle. Okay, so contract cycle, so in our country apne we have 3 contracts which are open. Okay, 3 contracts which are open: the near month, next month and far month. Near month is what? Current month. The current month is called what? Near month. मतलब अगर ये महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपने खोला, मतलब ट्रेड कर रहे हो आप ये महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज द नियर मंथ। नेक्स्ट मंथ, ओके, नेक्स्ट मंथ इज व्हाट? आप नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो। फार मंथ, मंथ नंबर 3 का कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड फार मंथ। ओके, expiration date. Now, every Thursday, the last Thursday of every month, last Thursday of every month is expiration date. What is that? Last Thursday of every month is expiration date. मतलब अगर आपने से मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है या बेचा है, या आई वुड से ओपन किया है, अगर आपने मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया है तो आपका एक्सपिरेशन डेट क्या होगा? व्हाट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च? व्हाट डेट इज इट? लास्ट थर्सडे ऑफ मार्च, वो नियर मंथ हो गया, 31st मार्च, करेक्ट। सो 31st मार्च ये महीने की एक्सपायरी है। गॉट दैट? नेक्स्ट मंथ, next month is what? So Swapnil, I'm explaining that right now. So near month is this month. Okay, next month is April, right? Next month is April. So what is the last Thursday of April? कौन सी डेट है? 28th April. So April के कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे वो कब एक्सपायर होंगे? 28th April को।
that is called next month. Near month is मार्च. मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 31 मार्च को एक्सपायर होंगे. अप्रैल is the next month. So next month will expire on the last Thursday of April. Far month is May. तो May के कॉन्ट्रैक्ट्स कब एक्सपायर होंगे? Last Thursday of May. 26th May is the last Thursday of May. Did you understand? So near, next, far. That's the contract cycle. Now, अगर आपने सपोजिंग कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है मई का, ओके, आपने रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 2600 रिलायंस का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपने खरीदा, लेकिन आप एक्सपायरेशन डेट आपके ऊपर है, आपको कौन सी चूज करनी है. और अगर आपने मई की चूज की कि भाई मेरे को मई का माय कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स इन मई, मतलब विच एक्सपायरी डिड यू चूज? फार मंथ. करेक्ट. आपने फार मंथ की एक्सपायरी चूज की. इट्स अप टू यू व्हाट एक्सपायरेशन यू वांट टू चूज. सो इफ यू चूज फार मंथ, so will that contract be affected on 31st of March? 31st of March भी एक्सपायरी आई तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा? 26 मई को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, नो. करेक्ट. एक्सीलेंट. उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बिकॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपिरेशन डेट क्या है? 26 मई. So till 26 May, this contract is valid. Okay? Till 26 May, this contract is valid. उसको 26 मई को भी नहीं फर्क पड़ेगा, उसको अप्रैल में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. That contract expires on the 26th of May. Okay? So जो expiration date है, the contract expires on that day. So it is valid till that day. Now 26 मई का आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, तो अगर आपने से कॉन्ट्रैक्ट खरीदा फर्स्ट अप्रैल को, आपने कॉन्ट्रैक्ट कब खरीदा? फर्स्ट अप्रैल में आपने 26 मई का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा. ओके, विच इज अ फ्राइडे, फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी. आपने कौन सा खरीदा? आपने मई का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा. कैन यू डू दैट? ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट. यू कैन चूज कौन सी एक्सपायरी में आपको ट्रेड करनी है. आपने मई की एक्सपायरी चूज की. अभी आ गया सेकेंड, थर्ड वॉज अ सैटरडे संडे एंड देन फोर्थ वॉज अ मंडे, एंड आपको मिल गया अच्छा सा वॉट एवर, यू गॉट एन एग्जिट. आप बेच सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द 4th of April. एक्सपायर तो 26 हो रहा है. यस. आपको आप इंट्राडे भी बेच सकते हो कॉन्ट्रैक्ट. बेचने की आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप कब बेचो इसको. यू कैन सेल योर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट whenever you want. You can exit your sell, मतलब if you sold you can buy. आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो भी पोजीशन ली है, आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो whenever you want. Okay, either you got an exit with a target or you got an exit with a stop loss. दो तरीके की एग्जिट्स रहती है, या टारगेट आ गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया. राइट. सो जो भी आपको एग्जिट मिले, आप वो ट्रेड में से एग्जिट कर सकते हो whenever you want. Okay, yes. Only thing is that last date of dealing with your contract is the expiration date. Okay, I hope I have made myself very, very clear. Lot size, I just made you understand what is lot size. It is basically a fixed number of shares which is decided by the exchange. कि अगर रिलायंस में ट्रेड करना है तो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करना है तो आपको बाय डिफॉल्ट 250 शेयर्स का में ट्रेड का एक्सपोजर लेना पड़ेगा, बिकॉज उसकी लॉट साइज 250 है. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एवरी शेयर विल हैव अ डिफरेंट लॉट साइज. So I hope these jargons are very clear to everybody. Okay, any doubts? Okay, great. Yes. So now let's talk about options. Okay. So Rekha, agar if you do not sell at expiry date, expiry matlab what? That the contract is null and void. If you don't do it, then the exchange will square it off for you. Okay. Okay. Yeah. So it becomes null and void. So your account will be settled for a profit or for a loss.
obviously you'll have to pay margin, no? So you take exposure in the derivatives market by in a futures contract. अगर buy करो या sell करो, आपको margin देना पड़ेगा आपके broker को. Okay, so that margin, so that's why I took like a ballpark of 1 lakh rupees, because you need to pay margin. Okay. So generally M2M margins be brokers take if you're in a loss. They will also give you M2M. You'll have to keep paying margins. Nahi to you can't be like sitting in. So brokers are not going to take your risk. Okay. So Om, you can definitely exercise your contract. You can speak to your RMs and you can take deliveries if you want. Yeah. Sudhir is saying, ma'am, why such a long waiting period of 1 or 2 or 3 months? Is it not a waste of time? So Sudhir, I just told you कि contract की expiration dates रहती है. Okay, so the contract is expiring then, but आपके ऊपर है ना, आप तो intraday उसको square off कर सकते हो, आपको थोड़ी ना wait करना है 1 या 2 or 3 months. Understood, Sudhir? You don't have to wait for 1 or 2 or 3 months. You buy a contract and you sell it off this thing intraday. Who's stopping you? That is the maximum period a contract can be held, right? Also, what happens is that depends on what your targets are, no? So how much does Reliance move in a day? If Reliance has the capacity of moving 10 rupees in a day, or say 5 rupees in a 10 rupees supposing in a day, and अगर आपका टारगेट है 100 रुपए का, तो थोड़ी ना एक दिन में आने वाला है. आएगा? नहीं आएगा ना. You need more time ना for that contract to work, right, Sudhir? अगर 100 रुपए का टारगेट है आपका, या से 60-70 रुपीज का टारगेट है, वो एक दिन में तो नहीं आने वाला है, और एक हफ्ते में भी शायद ना आए, बिकॉज ऐसे तो नहीं जाता है ना मार्केट. ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वैसे कर करके इट, there's a correction, again it goes up, again if you're bullish, right, there's a correction, again it goes up, it doesn't go up like that, right? So वो सब करने के लिए टाइम तो है ना. So depending on what your targets are, people will choose those expiries. Okay, so we will do all this. This is a very important thing कि कौन सी expiry choose करनी is a technique. So अपने जब strategies करेंगे, and आज ही करें, आज today only by evening you will understand how you will pick your strategies, when, what expirations do you choose. Okay. Now, so Gaurav has a question that can the contract be taken off any date in between? If yes, then so Gaurav, you have fixed expiration dates. You can't choose your expiry. So I just told you all that there is a near, next, and far. 3 months ka expiries are available, and the expiries are on the last Thursday of the month is expiration. So you can't choose your expiry date कि भाई मेरे को contract expire करना है 10 दिन में, वो आपके ऊपर नहीं है. Indices generally have a weekly expiry, Nifty, Bank Nifty, but beyond that, the stocks don't have weekly expiries. So last Thursday of the month ही रहता है. There are 3 fixed expiration dates. You have to choose from that what you want. Okay, you cannot decide your own expiration date, because there'll be chaos in the market otherwise. Because ये तो मैंने example दिया अपने 2 students के नाम लेके थोड़ी ना, there are like lakhs of contracts being traded. कौन किसका ध्यान रखेगा कहाँ trade हुआ? Correct? Thank you. Okay. Okay. So Bella, let's move forward. All this you can read also. So, let's move forward onto the main thing, right? Because we have a lot to cover. So an option is defined as so there are some stocks that are compulsory for delivery. Agar in the money ho gaya, that I will explain to you all what is in the money. And if you do not square it off, तो by default आपका delivery आ जाएगा आपके गले में. So you need to be very careful to square off your trades. Otherwise, you are in for big deliveries. Okay. So let's get on to our topic. So एक ज़माने में there were no deliveries. They were only cash settled in India. So all this exercising and all खाली US में होता था. लेकिन अभी exercising has started in India also since last I think 5 years, 5-6 years. So we've started इधर भी यहाँ भी अभी
एक्सरसाइज हो जाता है, सर्टन स्टॉक्स, सर्टन आर नॉट, बट मोस्टली लाइक एक्सरसाइज हो जाता है. सो अगर आपको नहीं लेनी है डिलीवरी, यू मेक श्योर दैट यू स्क्वायर्ड ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, अदरवाइज अननेसेसरीली डिलीवरीज गले में आ जाती है. यू विल हैव टू पुट इन दैट काइंड ऑफ मनी देन. Okay, so now let's start with what are options, why we use them. So I will just quickly read the definition and then I'm going to get out of this slide and I will explain to you what options are. Okay, so an option is defined as a financial derivative contract that provides a party the right and not the obligation to buy and sell an underlying contract at a fixed price by a certain time in future. Wow, so complicated, correct? Okay, so इसलिए अपने नहीं करते हैं definitions, right? Because ये सब ऐसे ही होते हैं. So now we are going to get into very simplified understanding of options. This is a super, super complicated topic. And I, in my way, I'm going to try and make it as simple as I can for all of you all. Okay, so in my little way, and by the end of the day, जिसको बिल्कुल options पता नहीं है, will say, I know full options. End of the day ये होने वाला है. Okay, but the thing is that आपको जाके वापस you will have to see the recordings before we meet again next time for the strategies. Okay, so I'm going to teach you this in a very as simplified way as I can from my side. Now, why are options used? Let's understand that first, then let's understand what are options. Okay, क्यों ये options में क्यों trade करते हैं? First of all, speculation. What is speculation? Short term trading. Okay, short term trading. सो अगर आपका व्यू 50 रुपीज का है या 60 रुपीज का है इन रिलायंस, अप या डाउन, बुलिश या बेरिश, तो आप थोड़ी ना डिलीवरी लोगे. सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन होल्डिंग द स्टॉक एट ऑल. आपको कोई डिविडेंड में इंटरेस्ट नहीं है, न स्प्लिट या बोनस, आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है. आपको 50 रुपया कमाना है. जो भी स्टॉक आपको 50 रुपया दे, आप उसमें एक्सपोजर लोगे. करेक्ट, आपको कोई लगाव नहीं है रिलायंस से या एशियन पेंट से या टॉक अबाउट एनी स्टॉक इन्फी या जो भी आप बोलो, आपको कोई लगाव नहीं है. आपको तो बस 50-60 रुपया कमाना है किधर से भी. So for you, delivery does not matter. So for that, you will come and you will trade in the derivatives market. Hedging. What is hedging? We will understand what is hedging. Okay, I'll just quickly tell you. So what is hedging? कि आपने एक exposure लिया. Okay, you took an exposure. Supposing we took an example ना, कि अभी एक रिलायंस का 2600 में कॉन्ट्रैक्ट किसी ने बाय किया. So what happens? अगर 2600, I'm talking about the buyer, okay, जिसने 2600 का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया. So what happens to his position if Reliance from 2600 crashes to 2550? Loss of 50 rupees? Yes or no? Okay, कल उठ के some more tensions develop, say Reliance gaps down से 60-70 rupees. Does he have control? He'll say, "I stop loss तो रखा था." तो stop loss trigger कहाँ पे हुआ? पूरा तो gap down हो गया. Where did you have stop loss? I mean, did you have the chance to even execute your stop loss? No. मार्केट ने चांस ही नहीं दिया. पूरा ही गैप डाउन हो गया. आपका फ्यूचर्स पोजीशन खुला है. ओके, आपका फ्यूचर्स पोजीशन रिलायंस का 2600 में आपने फ्यूचर्स बाय किया है. आपका पोजीशन खुला है. बिकॉज थोड़ी ना आप इंट्राडे कर रहे हो. आपका तो व्यू लंबा है, तो यू आर गोना होल्ड द पोजीशन. मार्केट गैप डाउन हो गया. मार्केट मेजर गैप डाउन हो गया, 2-3% गैप डाउन हो गया, तो थोड़ी ना रिलायंस बचने वाला है. वो भी तो गैप डाउन होगा. करेक्ट, आपने तो स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन आपका स्टॉप लॉस आपके दिमाग में रह गया. इट नेवर गॉट एग्जीक्यूटेड. मार्केट गॉट गैप डाउन. सो व्हाट विल हैपन? Loss and gap down होने के बाद, before you acted, Reliance further crashed down. What will you do about it? Nothing, right? I mean, जब भी you come to your terminal, it's already damage is done, and exposure लिया है 250 shares का. Okay, so that's the amount of loss also you're seeing over here. But so that is the kind of loss that comes in. लेकिन if you have hedged your position, what is that? फ्यूचर्स के पोजीशन के साथ आपने कुछ एक हेज यूनिट डाला है, एक इंश्योरेंस खरीदा है ट्रेड का. व्हाट इज एन हेज? इंश्योरेंस. सो अगर आपने कुछ इंश्योरेंस खरीदा है आपके ट्रेड को, तो आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा.
ओके, सो वील अंडरस्टैंड हाउ टू हेज, व्हाट आर द डिफरेंट हेज स्ट्रैटेजीज, वो पूरा अपने सीखने वाले हैं. बट दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कोई पोजीशन ली हुई है, हाउ आर यू गोइंग टू हेज योर पोजीशन टू मेक श्योर कि आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड ना हो. ओके, आपका कैलकुलेटेड लॉस होए, दैट्स फाइन. व्हाट इज अ कैलकुलेटेड लॉस? के भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है, आई एम ओके. बिना रिस्क को तो कुछ नहीं होता है. यू स्टेप डाउन फ्रॉम योर बिल्डिंग इन द लिफ्ट एंड यू गो ऑन द रोड आल्सो, यू डोंट नो वेदर, you know, I mean, what can happen, what cannot happen. So there is a risk in everything in life, right? So you, it's not that you don't, you know that okay, you step out of the house, you don't know, right? Like, will you stop going out of the house? No, right? So you, everybody takes a calculated risk in life, which has, that's the way it is, right? So in trading also it's no different. कैलकुलेटेड रिस्क तो अपने को लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे. सो द पॉइंट इज, कैलकुलेटेड रिस्क जब भी ले रहे हो तो कैसे ले रहे हो? आप हेज करके ले रहे हो. You know that even if the markets are going to crash say 3-4% tomorrow, but मेरा risk इतना है. Why? Because I have hedged my position. I know that this is the maximum damage. Okay, so that is called hedging. All right, so this is how it is. Now, leverage. What is leverage? Why will you trade in the stock market? I mean, why in the derivatives market? Major, the biggest candy over here, okay, sweetener over here is leverage. Okay, so Vijay, don't bother, we will be doing these strategies. All right, so Vijay is saying not clear under what circumstances stop loss applies in derivatives against hedging. So stop loss will apply for your futures. It depends on your strategy, right, Vijay? It depends on the strategy that you choose. Some strategies have inbuilt stop losses, and some strategies have you need to put a stop loss. So when we do strategies, we will be doing risk management of every strategy. Okay. So yes, so you will know. You don't need to check later. You will already learn about it when we do strategies. Yeah. So leverage. Now, what is leverage? So leverage is, supposing you have 1 lakh rupees in your account. You have 1 lakh rupees in your account. Reliance is say 2600. Reliance का प्राइस क्या है? 2600. आपके पास 1 लाख रुपीज है, आप कितना एक्सपोजर ले सकते हो कैश मार्केट में? कैन समबडी कैलकुलेट एंड टेल मी? 1 लाख रुपीज आपके पास है, आप रिलायंस का प्राइस है 2600, आप कितने शेयर्स लोगे? Okay, so you will do 1 lakh divided by, yeah, so 1 lakh divided by 2600. That is the number of shares, say 40 shares you can buy of Reliance if you have 1 lakh rupees. Now, in the, that is the cash market. Okay, अभी derivatives market. आपको पूरे पैसे नहीं देने हैं, आपको खाली margin देना है. Okay, supposing 1 lakh rupees is the margin that you pay. 1 lakh rupees is the margin that you will pay the broker to buy or to sell. To buy or to sell. Buy करो या sell करो, जो भी करो, आपको क्या देना है? आपको पूरे रिलायंस के पैसे नहीं देने हैं, बिकॉज आपने कहाँ खरीदा है रिलायंस? आपने तो एक कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर हो गए, राइट? टू एंटर दैट कॉन्ट्रैक्ट यू विल ओनली पे मार्जिन टू योर ब्रोकर. Okay, that margin could be 1 lakh rupees. Now, paying that 1 lakh rupees ka margin, how much exposure you took in the market? Lot size is 250. How much exposure? कितने shares का exposure लिया आपने? कितने shares का exposure लिया? Paying a margin of this thing. Margin is overnight. 250 shares, correct. So आपने 250, we are not talking about intraday over here at all. Okay, options are not advisable. I mean, I do not trade them intraday itna, but definitely there are a lot of people who do it, so nothing wrong with that. But generally options का अगर advantage लेना है, then you need to hold them. So when one lot is 250 shares, आपने exposure दिया of 250 shares का आपने exposure लिया by paying 1 lakh rupees. Okay, now Reliance moved up by 50 rupees. Reliance moved up by 50 rupees in 10 days time. Reliance का price हो गया 2550, sorry 2650. So जिसने अगर derivatives market में exposure लिया है, what is his profit and loss?
50 into 250. What is his profit? 12,500. What is that? 50 rupees जो profit है into 250, which is the lot size. Okay, so he got 50 into 50 is the profit into the lot size of 250 shares. तो उसको 12,500 का profit हो गया. अभी ना सेम ट्रेड जिसने कैश मार्केट में लिया है, उसने बोला भाई मुझे डेरिवेटिव्स मार्केट में नहीं काम करना है, मैं तो कैश मार्केट इज गुड फॉर मी, मेरे को तो 1 लाख रुपया लगाना है, मैं कैश मार्केट में लगाऊंगा. ही हैज टेकन एन एक्सपोजर ऑफ 40 शेयर्स. व्हाट इज हिज प्रॉफिट? द रिलायंस मूव्ड अप बाय 50 रुपीस, 2000. ओके, सो कैश वाले ने टू सेम ट्रेड है, सेम रिलायंस है, रिलायंस वेंट अप बाय से 20 फ्रॉम 2600 टू 2650, 50 रुपए का मूवमेंट अपसाइड आया. जो कैश मार्केट वाला बंदा है वो 2000 रुपया कमाया, जो डेरिवेटिव्स वाला बंदा है वो 12,500 कमाया. आर यू सीइंग द रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? आर यू सीइंग द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख फॉर बोथ. ओके, सो दैट्स लेवरेज. What is that? That is leverage. ये जो leverage अपने को मिलता है in the derivatives market is the sweetener or the candy to come and trade here. Because आपको long term में तो interest है नहीं. You want to take advantage of the short term movements, up या down, whatever, right? So because of that, you will take advantage of leverage. All right. Now, so I just explained it, Sikandar, that if you have to pay a margin and you will get exposure of those number of shares. Okay, you have by in the derivatives market you will take exposure of 250 shares. In the cash market you will take exposure of 50 shares, right? Because अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है 50 रुपया, तो मतलब 50 रुपये का अपसाइड है. देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज. तो जिस कैश मार्केट में जिसने 40 शेयर का एक्सपोजर लिया है उसका प्रॉफिट 200 होगा. जिसने 250 शेयर्स का एक्सपोजर लिया है, ऑब्वियसली एक्सपोजर ज्यादा है, राइट? इन द डेरिवेटिव्स मार्केट 250 शेयर्स है बिकॉज दैट्स अ लॉट साइज, उसका एक्सपोजर ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. नाउ दैट इज द एडवांटेज of trading in the derivatives market, which is called leverage. Okay, so that is the leverage that we are talking about, which is why we want to come and trade here. Okay, so now actually I should have put leverage pehle and hedge niche, so that's okay. So now leverage is a double-edged sword. Okay, what is leverage? The leverage is a double-edged sword. So 1 lakh rupees जब भी आप invest करते हो, ऊपर जाता है तो आपको 12,500 का प्रॉफिट भी मिलता है. लेकिन जब नीचे जाता है ना, व्हेन द पोजीशन गोज अगेंस्ट यू, आपको जो 12,500 का जो प्रॉफिट हुआ था ना, उतना 12,500 का लॉस भी होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट? आपको उतना लॉस भी होगा. दैट इज अ डिसेंट 12% लॉस ऑन योर कैपिटल ऑल्सो. ओके, वेयरएज इन द कैश मार्केट आपके कैपिटल में से खाली 2,000 रुपया गया, विच इज काइंड ऑफ हार्डली एनीथिंग. Okay, whatever percentage risk. So it is a double-edged sword, leverage. जितना अच्छा है उतना बुरा भी है. So because of that, hedging is required. Okay, so the solution to risk with leverage is hedging. Okay, so now okay. So guys, again, stay with me. No questions beyond what I'm saying, Priyanka. Option sell कैसे करते हैं? अपने तो option सीखे ही नहीं है अभी. So please don't let your mind go उधर. जो मैं बोल रही हूँ उसमें if there are doubts, please put it up on the chat, not otherwise. Okay. Vijay, margins are different for every shares. Generally, 1 lakh rupees is the ballpark. उतना होता है, plus minus little bit, 1 lakh से. But every depending on the risk profile of the company, there's so yeah, okay, yes. So now there are two types of options: call option and put option. There are two types of options. What are they? Call option and put option. What is a call option? Call option is a right to buy. Okay,
and put option is the right to sell. Okay, call option is the right to buy, put option is the right to sell. Let's move forward. We'll understand these in details. Okay. So we'll come to this later. So now let's understand what are options. Let's understand call options. Okay. So ye jab when we are learning these, we will come out of the stock market little bit and ekdam let's come down to real life examples. Okay. एकदम एक रियल लाइफ आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट का एक बेसिक एग्जांपल से सीखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज ऑप्शंस. Okay, fine. So we have Sandeep over here and we have Vijay over here. All right, Sandeep and Vijay are both attending our class. Sandeep wants to start a say coaching class. Okay, Sandeep wants to start a coaching class, and Vijay. Okay, so let's talk about Sandeep first. That he wants to start a coaching class. So he's like, okay, Jabi, when we want to start a business plan, right? I mean, when you want to start a business, you will have a business plan, right? कि भाई ये मुझे, I want to, yes, I will do a mix of Hindi and English, guys, because some people want Hindi, some people want English. So I'm talking very, very easy English. ओके बिकॉज अगर आप टाइप कर सकते हो प्लीज हिंदी, दैट मीन्स आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो, राइट? और जो टाइप करते हैं प्लीज इंग्लिश, वो आप थोड़ा बहुत हिंदी भी जानते हो. सो सिंग इन बॉम्बे वी ऑल नो बोथ लैंग्वेजेस, तो थोड़ा एवरीबडी विल हैव टू एडजस्ट अ बिट. मैं इंग्लिश जब भी बोलती हूँ तो आई एम टॉकिंग वेरी वेरी इजी इंग्लिश, आई एम नॉट टॉकिंग कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज. मैं स्लो बात करती हूँ एंड हिंदी ऑल्सो मैं करूंगी तो आई विल टॉक स्लो. सो वी विल ट्राई एंड गेट अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ओवर हियर. Okay, so because there is a mix of both the people here. Huh? Yeah. Okay. Now, so now, yes. So now if Sandeep wants to start say a tuition, he wants to start like a coaching class. So he obviously has a business plan. Okay. So according to his business plan, he has to buy some raw materials. What is his raw materials? His raw material is books. उनको books buy करनी है. So now when he wants to buy books, he's like, okay, I cannot afford more than say 11 rupees on books. ओके अगर इससे ज्यादा अगर बुक्स का कॉस्टिंग आ गया तो मेरे लिए वर्कआउट नहीं होएगा. सो आई शुड ट्राई एंड सोर्स माई बुक्स एट 11 rupees. सो ही गोज टू द होलसेल मार्केट. ही सीज दैट ओके इतने सारे बुक्स की दुकानें हैं वहां पे, एंड ही कम्स अक्रॉस विजय's शॉप. विजय की शॉप की बाहर लिखा है बुक्स एट ग्रेट प्राइसेस, बुक्स एट 10 rupees, बुक्स एट 10 rupees. ओके, सो great discounts, like deals and this and that. So Sandeep is like, अरे यार देखते हैं यहाँ पे क्या है, what's happening over here. So he goes to the shop inside and he tells Vijay भाई मुझे books खरीदनी है. So what price are you going to sell them to me? So Vijay said 10 rupees. He like okay perfect. लेकिन मुझे बुक्स आज नहीं चाहिए, मैं आज डिलीवरी नहीं लूंगा बुक्स का. अभी मेरा सब काम चालू है, ऑल इंटीरियर वर्क इज गोइंग ऑन. आई विल टेक माई बुक्स ओनली say after 1 month. Okay, so 1 month की जब भी like after 1 month I'm going to take these books. उसके पहले I will not take delivery of these books. So विजय ने बोला ओके ठीक है नो प्रॉब्लम, आप डिलीवरी 1 महीने के बाद ले लीजिए. तो संदीप सेड लेकिन प्राइस तो मेरी 10 रुपए रहेगी. My prices will not change. You will not say कि अभी भाई बुक्स की and probably there's some GST happening, कुछ हो रहा है. And विजय and संदीप को टेंशन है कि बुक्स का अगर प्राइस बढ़ गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा. आई एम नॉट ये अगर बढ़ गया तो, and I think बढ़ेगा, probably he thinks that बढ़ेगा. So that's why he goes to Vijay.
Okay, and तो विजय को he says भाई I will not pay anything more than 10 our contract is 10 rupees. मैं end of the month I will come and I will pick up books from you at 10 rupees. So विजय ने बोला ठीक है. Now विजय says लेकिन भाई जो बुक्स है ना उनके मेरे पास पैकेट्स रेडी है. एक पैकेट में 100 बुक्स है. ओके, एक पैकेट में 100 बुक्स है. So he'll say, okay, ठीक है ना, एक पैकेट में अभी let's talk about one packet right now. One packet has 100 books inside. So and I will not break my packet. ये जो पैकेट है आपको पूरा पूरा पैकेट खरीदना है and you can decide how many packets you want to buy from me. So हर एक so he will say yeah, okay, done. So he'll say, okay, right now I will buy one packet from you, 100 books का. Okay, so he said yeah, fine, done. So he's like, okay. So Sandeep, so Vijay says, अरे बाबा जरा रुको. No, so Sandeep says, लिख के दे दीजिए मुझे, क्या आप ये मुझे बेचने वाले हो एंड ऑफ द मंथ. What did Sandeep tell Vijay? आप लिख के दे दीजिए मुझे कि कुछ तो प्रूफ रहे ना कि आप मुझे बेचने वाले हो. Then you'll say, अरे संदीप हुआ यू if I come end of the month then. तो कुछ जरा लिख के दे दीजिए कि मुझे भाई आप मुझे देने वाले हो बुक्स 10 रुपीज में एंड ऑफ द मंथ, भले जो भी मार्केट प्राइस हुए. So Vijay said, हाँ, of course. So Vijay takes out a piece of paper and he writes on the piece of paper, I will sell, listen to me. Okay, very, very clearly. ये पूरा concept मैं समझा रही हूँ आपको. Is everybody with me till here? समझ आ रहा है सबको क्या हो रहा है ये स्टोरी में? Okay, yeah, that's why I'm making it very, very simple in real life example. Okay, खाली every time you're getting confused, मेरी story खाली याद कर दीजिएगा, पूरा समझ आ जाएगा आपको. Okay, so now. सो विजय ने एक पेपर निकाला और उसके ऊपर लिखा, क्या लिखा? आई विल सेल 1 पैकेट ऑफ 100 बुक्स टू संदीप एट 10 रुपीज एंड ऑफ द मंथ. इन हिंदी ना, उसने लिख के दिया, विजय ने संदीप को लिख के दिया कि भाई संदीप, मैं आपको एक पैकेट ऑफ 100 बुक्स बेचूंगा end of the month when you come to me at 10 rupees. Everybody understood? वो लिख के उसने लिखा. फिर संदीप said, okay, give me. विजय said, भाई ये contract has a value. ये जो मैंने piece of paper में जो लिखा है उसकी थोड़ी value है. So I cannot give this to you ऐसे ही. So संदीप ने बोला, भाई क्या value है? He said 1 rupee. ये पेपर में आपको 1 rupee में I can sell it to you. I will sell this paper जो मैंने लिखा है, right? That I will sell 1 packet of 100 books to you at 10 rupees end of the month. ये जो मैंने लिखा है piece of paper में, ये पेपर में आपको बेच रहा हूँ for 1 rupee per packet. So संदीप will say, ठीक है ना, मेरा तो बजट था ही 11 रुपए का. उसका नाउ प्राइस क्या हो गया? बाइंग प्राइस ऑफ द बुक 10 रुपीज प्लस ये 1 रुपी ऑफ द पेपर. ये पेपर की कीमत है, बुक्स नहीं है इसके अंदर इन्वॉल्व. what is this 1 rupee is the cost of buying this paper, buying this written paper. वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया. वो पेपर, वो कार्ड जो दिया, that becomes a contract in a way, correct? So the cost of buying this contract is 1 rupee. Is everybody with me till here? Is everybody with me till here? Any doubts? So ये जो 1 rupee है, that has nothing to do with the books. That is the cost of the transaction. Cost of the transaction, you would say cost of that. वो जो पेपर है उसने जो उनको दिया 1 रुपए में दिया और उन्होंने ये पेपर 1 रुपए में खरीदा. Okay, now okay, great. Now you are now end of the month आया, end of the month आया. So end of the month में बुक्स की जो प्राइस है
वो कुछ सम टैक्स रिफॉर्म्स केम, सम शॉर्टेज हैपेंड समवेयर, जो भी पता नहीं जो भी हुआ, बुक्स की प्राइस अभी हो गई 13 रुपए की. व्हाट हैपेंड टू द प्राइसेस ऑफ द बुक्स? एंड ऑफ द मंथ बुक्स जो 10 रुपए की थी अब हो गई 13 रुपए की. 3 रुपीज बढ़ गया ऑन द MRP, 30% राइज इन प्राइस. सो अब संदीप क्या करेगा? ही इज वेरी हैप्पी. इज संदीप हैप्पी? ऑफ कोर्स. उसके पास तो एक पेपर है जिसके ऊपर लिखा है कि भाई विजय, यू विल हैव टू सेल मी बुक्स एट 10 रुपीज. ही इज तो सुपर हैप्पी. लाइक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत तू अच्छा काम किया. यू वेंट एंड बॉट ऑल दीज बुक्स, इतना ये पेपर लिया, भले 1 रुपया दे दिया टू बाय दिस पेपर, लेकिन अभी मेरे को फायदा हो गया ना, बिकॉज प्राइसेस वेंट अप नाउ एंड आई विल येट गेट टू बाय माई बुक्स एट 10 रुपीज. यस और नो? संदीप विल गो रनिंग टू विजय शॉप एंड से भैया मेरी बुक्स दे दो. What will Vijay say? Can Vijay say अब नहीं, मैं नहीं दूंगा? Can he say that? Can Vijay refuse? Can Vijay refuse? He cannot, because he is written and given him. He's written and giving him कि भले जो market price, I will sell you books at 10. और उसका उसने 1 रुपया भी लिया है लिखने का, करेक्ट? तो वो तो मना कर ही नहीं सकता है, भले मार्केट प्राइस जो भी है. इफ संदीप कम्स टू विजय शॉप, ही विल हैव टू सेल हिम द बुक्स एट 10 रुपीज. लेकिन अगर सुभाष कम्स टू विजय शॉप एंड से भैया मुझे एक पैकेट बुक्स का चाहिए और 100 बुक्स का एक पैकेट चाहिए, वो कितने में सुभाष को बेचेगा? तो सुभाष को कितने में बेचेगा विजय? 13 रुपीज, करेक्ट? बिकॉज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सुभाष और विजय के बीच में, वो तो करंट मार्केट प्राइस में बेचेगा. लेकिन अगर संदीप जाएगा उसके पास तो उसको संदीप को बेचना पड़ेगा एट 10 रुपीज, बिकॉज वो लिख के दिया है उन्होंने. ओके, करेक्ट? सो नाउ दैट इज वन सिचुएशन कि बुक्स की प्राइस बढ़ गई फ्रॉम 10 to 13. तो उसमें क्या हुआ? विजय मेड अ लॉस ऑफ हाउ मच? पहले संदीप की बात करते हैं. हु हैज बॉट द कॉन्ट्रैक्ट? संदीप मेड अ प्रॉफिट और लॉस? संदीप मेड अ प्रॉफिट और लॉस? संदीप हैज बॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बुक्स. संदीप हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? संदीप हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 3 रुपए का प्रॉफिट, अग्रीड. 3 रुपए का उसका प्रॉफिट है, लेकिन 3 रुपए के प्रॉफिट के अंदर 3 रुपए का प्रॉफिट है. ओके, सो 3 रुपए के प्रॉफिट के अंदर उसने 1 रुपया तो बाई किया ना पेपर, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपए का. 2 रुपए का उसका नेट नेट प्रॉफिट है. बिकॉज एक्चुअली वाई वाई वी टॉक अबाउट प्रॉफिट, बिकॉज उसको एडवांटेज हुआ ना उतना. मार्केट में प्राइस अगर 13 रुपए का है, लेकिन उसको ये बाई करने से एडवांटेज कितना हुआ? उसको 3 रुपए का एडवांटेज हो गया. यस और नो? एडवांटेज इज व्हाट? एडवांटेज ऑफ बाइंग द कार्ड फ्रॉम हिम. ये जो कार्ड बाई किया उसका उतना उसको एडवांटेज कितना मिल गया? बिकॉज ऑफ बाइंग दिस कार्ड ही गॉट एन एडवांटेज ऑफ 3 रुपीज. डज एवरीबडी अग्री? एडवांटेज 3 रुपए का हुआ, करेक्ट? 3 रुपए का एडवांटेज हुआ भाई. 1 रुपया भाई ये खरीदने के लिए दिया हुआ था, तो नेट नेट एडवांटेज मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का. प्रॉफिट इन द सेंस रियल प्रॉफिट नहीं, रियल प्रॉफिट नहीं हुआ उसको, इन द सेंस प्रॉफिट ही हुआ इन अ वे, बट इन द सेंस he got the books cheaper by 2 rupees compared to the market, because he had bought this option, because he had bought this card, correct? Now what about Vijay? Vijay took a loss of 3 rupees. He had a disadvantage of 3 rupees. I would not say loss, say disadvantage of 2 rupees. Kyun disadvantage of 2 rupees? Okay, the disadvantage will be जब भी कोई और आता है उनकी दुकान में तो वो उनको बेचते हैं 13 रुपए में, लेकिन अगर संदीप आएंगे तो संदीप को उसको बेचना पड़ेगा 10 रुपए में. सो दैट इज वाई ये कार्ड देने से उनको डिसएडवांटेज है ऑफ 3 रुपीज. लेकिन 1 रुपए में तो वो खरीदा था ना, he had kept that 1 rupee no with him, so he has basically a disadvantage of 2 rupees now. Is everybody understanding? Guys, please don't get into tax wax all that yaar. Please try and understand what all this is. Please try and understand. This concept is a super difficult concept. I'm trying to put this into very easy terms. Please stop converting into numbers and this and that. You'll confuse yourself. Stay with me. As I said, please stay with me. Okay, we are not getting into tax benefits right now. All right, please, so stay with me and try and understand. ये पूरा मैं कॉल ऑप्शन सिखा रही हूँ आपको इन सच एन इजी वे. जो आप पढ़ते रहो कोई भी बुक 1 महीना, आपको समझ आएगा तो मुझे बताइए.
Okay, I'm teaching you a very complex topic in a very, very simple way, as much as I can. All right, so please stay with me. So, yes. So what happens is that now I've also forgotten what I was saying. Um, yes. So that is one situation, that the books went from 10 to 13 rupees. Now books went, that's one situation. अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं. बुक्स जो 10 रुपए में बिक रही थी, ओके, बुक्स जो 10 रुपए में बिक रही थी, अभी उसका प्राइस ड्रॉप हो गया 8 रुपीज. ऊपर तो नहीं गया, लेकिन बुक्स का प्राइस 2 रुपया कम हो गया. चलो लेट्स कीप इट अ स्टैंडर्ड 3 रुपीज. ओके, बुक्स वेंट डाउन बाय 7 टू 7 रुपीज. क्या हो गया? फर्स्ट सिचुएशन वी स्पोक अबाउट 10 to 13 रुपीज. नाउ आई एम सेइंग बुक्स बढ़े तो नहीं, कम हो गया प्राइस 3 रुपया. हो सकता है, नहीं हो सकता है. एक सिचुएशन प्राइस ऊपर गया, दूसरी सिचुएशन प्राइस नीचे. फर्स्ट सिचुएशन वी अंडरस्टूड, प्राइस जब ऊपर गया तो क्या हो गया. ओके, वी अंडरस्टूड के जो बायर था उसको प्रॉफिट हो गया, उसको एडवांटेज मिल गया बाइंग इनटू गेटिंग दिस ट्रांजैक्शन. और जो सेलिंग था, सेलर था, उसको डिसएडवांटेज हो गया कि भाई जो मैंने लिख के दिया था उसके तो ऊपर प्राइस चला गया, तो डिसएडवांटेज हो गया. इट वाज नॉट द राइट थिंग. नो प्रॉब्लम, होता है. सो सेकेंड सिचुएशन, प्राइसेस वेंट डाउन. हो सकता है, राइट? प्राइसेस ऊपर नहीं गए, कम हो गए. सो व्हेन द प्राइसेस केम डाउन, संदीप क्या करेगा? विल ही गो टू विजय? विल ही गो टू विजय? ही विल नॉट गो टू विजय, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या लिखा है? आई विल बाय द, संदीप, विजय ने क्या लिख के दिया है? आई विल सेल यू द बुक्स एट 10 रुपीज. भाई जो भी मार्केट प्राइस, उसने नहीं बोला था कि कम हो जाएगा तो मैं कल में कम में बेचूंगा. उसने क्या लिखा है भाई? जो मार्केट प्राइस है मैं आपको 10 रुपए में बुक्स बेचूंगा. तो अगर संदीप गोज टू विजय, उसको बुक्स 10 रुपए में खरीदने पड़ेंगे. यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट में तो वही लिखा है, that he has agreed to sell. करेक्ट? तो संदीप अगर विजय के पास जाएगा तो उसको 10 रुपए में खरीदने हैं बुक्स. लेकिन अगर प्रियंका की बाजू में दुकान है, उसने तो प्रियंका के पास से ऐसा कुछ लिया नहीं है, तो प्रियंका तो उनको 7 रुपीज में बेचेंगी. करेक्ट और नो? प्रियंका will sell for 7 rupees. Why? Because that's the market price. So what will he do? What will Sandeep do? Sandeep will say, भाई ये मेरा कार्ड है ना, I am going to tear it and throw it in the dustbin. What will she say? I will throw it and tear it and throw it in the dustbin. मुझे नहीं चाहिए ये कार्ड, because ये कार्ड अगर मैं एक्सरसाइज करूं और इफ आई गो टू दिस कार्ड विद दिस कार्ड टू संदीप, संदीप मुझे 10 रुपए में बुक्स बेचेंगे. भाई मैं क्यों 10 रुपए में बुक्स खरीदूं जब भी मेरे को बाजू की दुकान में 7 रुपीज में मिल रहा है. व्हाट विल ही डू? ही विल टेयर द कार्ड एंड ही विल थ्रो इट इन द डस्टबिन. अब ये कार्ड की कीमत क्या थी? 1 रुपी. What was the cost of this card? 1 rupee. He'll say, जाने दो 1 rupee. मुझे ठीक है, it's okay. Let the 1 rupee go. Because it is basically that I'm getting a benefit of 2 rupees over there. So I will let go my 1 rupee. I will throw it in the dustbin and I will buy the books from the neighboring store. Because मुझे वहां से books current market price मिल रहा है, because books के prices crash हो गए. Okay? Does everybody understand this now? Everybody understands this now? ये situation? Okay? Fine. So, अभी जो बायर है उसमें, अभी लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है? सो जो बायर है उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये सिचुएशन में, विद दैट कार्ड, फ्रॉम द कार्ड पॉइंट ऑफ व्यू? कार्ड का है, उसको लॉस हो गया. तो ही वाज ओके. ही सेड ठीक है ना, ये जाने दो 1 रुपया, मेरे को ओवरऑल बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है. आई विल बाय फ्रॉम द मार्केट. ओके, मुझे ये कार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, मेरे को ये दिस थिंग, यस, प्रॉफिट, यस. सो आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज दिस, आई डोंट वांट टू यूज दिस कार्ड. अब सेलर की बात करते हैं, विजय. उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कैसे? बिकॉज उनके पास तो बायर आया नहीं, उनके पास बायर आया नहीं खरीदने, राइट? तो बायर आया नहीं तो 1 रुपया उन्होंने रख लिया. करेक्ट?
सो उनको फर्क पड़ता है मार्केट का प्राइसेस बुक के कितने नीचे गए, 7 रुपीज हुआ, 6 रुपीज हुआ, 5 रुपीज हुआ, 2 रुपीज हुआ, 1 रुपी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. For him, his profit is only the money that he received to sell the card. Yes, उनका प्रॉफिट क्या है? मनी दैट ही रिसीव टू सेल द कार्ड. उनको कितनी बुक्स नीचे गए उनको फर्क नहीं पड़ता है. इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट हिम कि 10 रुपीज से नीचे गए बुक्स, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा. उनको क्या फर्क पड़ेगा कि बायर मेरे पास आया नहीं तो उनका 1 रुपया मैंने रख लिया. दैट इज हिज प्रॉफिट. ओके, नाउ थर्ड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन, what can be the third situation? Prices of the books never changed, सेम ही रह गए. हो सकता है, हो सकता है, राइट right? या तो प्राइस ऊपर जा सकता है, या तो प्राइस नीचे जा सकता है, या तो प्राइस सेम रह सकता है. यस, व्हाट इज द थर्ड सिचुएशन? प्राइसेस ऑफ द बुक्स डिड नॉट चेंज, they stayed the same. So now if the prices of the books stayed the same, and if Sandeep goes to Vijay is very happy to sell him at 10 rupees. Yes or no? Vijay is very happy to sell at 10 rupees. Why? क्या फर्क पड़ता है? एंड उसने बेनिफिट किसका हुआ? विजय का. क्योंकि विजय ने 1 रुपया तो बुक वो कार्ड खरीदने बेचने के लिए लिया था, राइट? वो कार्ड बेचने के लिए उन्होंने 1 रुपया तो रख लिया था ना. एंड संदीप ने दिया भी था दैट 1 रुपी. सो संदीप लॉस्ट दैट 1 रुपी एंड विजय केप्ट दैट 1 रुपी. जो संदीप का 1 रुपया है वो विजय ने रख लिया और विजय ने बुक्स 10 रुपीज में खरीदे. सो it did not benefit Vijay, but it did not benefit Sandeep, but it benefited Vijay, who was the seller of the card, right? Because उन्होंने करंट मार्केट प्राइस में ही बेचे बुक्स और उसने कार्ड भी तो डबल से बेचा. Got that? So is everybody understanding this whole concept? Any doubts in my story? Any doubts? Super. Now, this card